not being a virgin a red flag? Not being a virgin. Let's go for a guess. No. Not being a virgin, no. I don't think so. Honestly, it doesn't matter. No, it just means you don't have riz. That's what it means. It's not a red flag. No, I guess it is not. No. No, for me it is. नो अगर कोई वर्जिन नहीं है तो वो रेड फ्लैग नहीं है. See, if I'm virgin, I would want my partner to be virgin too. But ये red flag नहीं होगा. But that's personally my preference. कि if मैं virgin हूँ तो मेरे को सामने वाला भी चाहिए. And if अगर मैं नहीं हूँ तो फिर it's okay. लाइक आजकल के ज़माने में तो इट इज़ नॉर्मल, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा लाइक ओल्ड स्कूल है. अगर आप एक रिलेशन में रह के यू हैव लूजिंग योर वर्जिनिटी एंड आप सेकंड में जा रहे हो, देन इट इज़ अ रेड फ्लैग. फर्स्ट में क्यों होगा? आप अगर उसी इंसान के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हो तो देन व्हाई इज इट अ रेड फ्लैग? I mean, past is past. Past doesn't matter. Past doesn't matter. I wouldn't want कि मेरा partner मुझसे ये question पूछ के मुझे judge करे, so I would not judge anybody else also. Yeah, if I'm 40 and I'm looking for a potential partner, I am not expecting anybody to be a virgin by then. But say I'm just in college first year, then at least myself, I don't want to offend anyone, I would feel that it is a red flag for me. ठीक है, अगर किसी का कुछ पास रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन एज एक्चुअली. अगर मैं एक 17-18 साल के बंदे को डेट कर रहा हूँ, वो वर्जिन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ मे बी रेड फ्लैग है. बट अगर कोई 24-25 की एज में है तो वो वर्जिन नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली. It's about being with the person. If he or she is a virgin or not, that's clearly up to them. It's not gonna affect the relationship. Boss, why it is a red flag? He's not a virgin. So, like maybe he just got in a flag or he got cheated. तो उसकी अलग स्टोरी हो सकती है. तो it is not definitely true is a red flag. अगर कोई वर्जिन नहीं है तो वो रेड फ्लैग नहीं है. इट मीन्स दैट पर्सन इज स्टिल waiting for the right person at the right time to come in his life. We live in this society right now. I don't think everyone is virgin, and if I blindly believe that I will get someone virgin, it's stupid, I guess. अगर आप if you have intimate life, आप रह चुके हो किसी के साथ और आपने if you have been someone with someone, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या उसमें मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि आप it's a red flag. Anybody can have past relationship. Even when you like in arranged marriage, when you get to marriage, you don't know the past of her, and she can also lie. You can't be 100% true to